I think the beauty of the panel discussion is that in that moment there are certain things that come out. If I do it alone, it seems very preachy. वो बातचीत जो हो रही थी उसमें एक मजा आता है. I wish I could have all of you in there to have that conversation, but it predominantly stems from the fact that certain films deserve a certain kind of structure of being promoted. We have to understand कि हमारी audience देश की आवाम बहुत बड़ी है. तो you cannot just segregate से कि हम इस तरह की पिक्चर बनाते हैं या उस तरह की. You have to keep the audience in mind when you make a film. Box office business is not always equivalent to how good or bad the film is, and that should not be the only aspiration. एक होता है कि you make good films that do good business. The idea is to keep evolving where cinema is concerned, give better talent a chance, give more talent a chance. जो चीज़ें हमें शायद पता है, जो हमारे जहन में वो बातचीत में निकल के उभर के आती है, that we are heading in a good direction. जहाँ तक हमने आज बात की, there is a company called Rentrack, जो all over the world they officially disclose figures to you every night. rather than speculation जो हमारे यहाँ होता है, जहाँ पे हम अपना सीना ठोक के बोलते हैं हमने हमारी पिक्चर ने इतना पैसा किया, जो मुझे लगता है गलत है. बिकॉज एक अनबायस्ड सोर्स और ओपिनियन होना चाहिए ये नंबर्स को लेके. आजकल भागदौड़ बन गई है नंबर्स को लेके, जो बहुत सैड है वैसे, पर अगर करना ही है तो ऑफिशियली होना चाहिए ताकि कोई छेड़खानी ना हो, क्लीन हो सके. तो उस चीज़ पे चर्चा हो रही थी कि आज अगर हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिले एक सोर्स के द्वारा, तो हमें पता लगेगा हमारी पिक्चर कहाँ पे ज़्यादा बिजनेस करती है, किस तरह के थिएटर्स में चल रही है, कितना बिजनेस से राजस्थान में होता है तो कितना पंजाब में होता है. अगर हमें पता करना है कि हमारी मार्केट साउथ में कितनी अच्छी हुई है, तो एज एन एक्टर आपको अपनी औकात भी पता लगती है, एज ए प्रोड्यूसर आपको फिल्म की औकात पता लगती है, एज ए डायरेक्टर यू अंडरस्टैंड ओके द डायस्पोरा इज सो ह्यूज. शायद जो आपको पसंद आए इस यहाँ पे मुंबई शहर में, वो शायद गुजरात में उतना ना चले. एंड इट्स वेरी फेयर बिकॉज सेंसिबिलिटीज हर जगह की अपब्रिंगिंग अलग होती है, हर जगह के सोच विचार अलग होते हैं. सिनेमा गोइंग सेंसिबिलिटीज जिस पे आप बड़े होते हैं वो अलग होती है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल दैट यू केटरिंग टू. आई थिंक Rentrack कैन अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंसेस मच बेटर, विच इज जो हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए एज एन एक्टर, एज समबडी पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, सबसे अहम है. हम काम करते हैं ऑडियंस के लिए. वी माइट एंजॉय सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा, पर इवेंचुअली हम सब तक पहुंचना चाहते हैं, हर ऑडियंस मेंबर तक पहुंचना चाहते हैं. दिस विल मेक अस अंडरस्टैंड हम कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक जा सकते हैं. नो, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक सी ईच फिल्म इज अलाउड इट्स ब्रीदिंग स्पेस. आजकल थिएटर कल्चर हो गया है 1 हफ्ते 2 हफ्ते का. हैदर और बैंग बैंग अभी 3 हफ्ते चल रही हैं, उसके बाद फिर हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगी, विच इज अ बिग रिलीज, सो दैट टेक्स ओवर द एक्स नंबर ऑफ थिएटर्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक स्ट्रेट व्हेन शी इज स्टैंडिंग. इधर आ जाएगा. तो आई थिंक वो अनफेयर है. जैसे 2 स्टेट्स अभी टीवी पे आई है, दिवाली पे लगी थी अप्रैल में, तो 5 months इज इनफ टाइम फॉर द फिल्म टू डू व्हाट इट हैज टू डू थिएट्रिकली. इट इज नॉट अबाउट मैनिपुलेशन. अब जो सोर्स है वो एक्चुअली जिन्होंने पिक्चर बनाई है वही सोर्स बनता है, बिकॉज सिर्फ उनके पास पहली इन्फॉर्मेशन आती है. तो देयर इज नोबडी टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट ना. अगर हो भी रहा है मैनिपुलेट या नहीं हो रहा, आप कैसे, अगर मान लीजिए ट्रेड के गाइस में इन्फॉर्म करते हैं तो अलग अलग के पास, देखिए अगर आपको एक नंबर दिया जा रहा है, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए ना बोलने को कि मैनिपुलेट हुआ है. तो वो एविडेंस कहाँ से है कि कोई ऑफिशियल सोर्स है. अगर आपको नंबर नहीं पसंद है, आपने बोल दिया, तो मैं कैसे मान लूँ? या आपको लगता है कि ये सही नहीं बोल रहा, मैं कैसे मान लूँ? इवेंचुअली देयर हैज टू बी अ लीगल ऑफिशियल वे ऑफ पुटिंग दैट नंबर अक्रॉस, ताकि ऑडियंस को भी पता है कि ये ऑफिशियल नंबर है और प्रोड्यूसर ने ये बोला था. पर वो ऑफिशियल नंबर हमारे पास है नहीं. तो Rentrack जैसी चीज़ जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, हमारे ओवरसीज़ के फिगर Rentrack ही हैंडल करता है. तो आप अगर हमारे ओवरसीज़ के नंबर्स देखेंगे, चाहे वो UAE हो, चाहे वो UK हो, चाहे US हो, Rentrack डील्स विद ऑल आवर नंबर्स. तो देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन दैट. आज तक आपने ये नहीं सुना कि ओवरसीज़ में हमने सुना है 4.2 किया या 4.6 किया. आपको वो डिस्पैरिटी नहीं आती. तो कहीं ना कहीं Rentrack आना बहुत अच्छी चीज़ है मीडिया के लिए, ताकि tomorrow if we make a false claim, you can catch us out. There is evidence for the producers to know what they are supposed to say, rather than announcing on one night before. Take the morning and then announce it. जल्दबाजी कम हो जाएगी, गलत नंबर शायद कम निकलेंगे और बहस कम होगी. आज क्या होता है ना, कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है तो एक यहाँ से नंबर आता है, एक वहाँ से काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, एक बोलता है इसने झूठ बोला, एक बोलता है नहीं ये करेक्ट नंबर है. वो सब शायद बंद हो जाए और हम फिल्म पे ध्यान देते हैं, जो जिसके लिए हम काम करते हैं. To begin with, because like he said, it takes time to seep into like I keep saying, we have a huge number of theaters in the country. We have a huge number of single screen theaters. It will take them time to interact one-on-one with these people, to get them to feel comfortable to share figures. एक journey होती है. What he did say is the multiplexes are more than willing. That's about 50%. That's a good start there. At least you know 50% is going to be straightforward. And hopefully within a year, hopefully with the support of the film industry, with the support of the theatre owners, the transparency improves and it will become easier for all of us to move beyond discussing picture ne business kitna kiya.
तेवर के ट्रेलर को नहीं किया मैंने, तेवर के पोस्टर को मैंने अपलोड किया था। उसकी खास वजह यही थी कि मैं पहली बार जब ट्विटर पे आया था मुझे थोड़ा डर सा था कि इंटरेक्शन कैसी होगी तभी, पर अब मुझे मजा आता है ट्विटर पे। मैंने सोचा ये शायद ऐसी पिक्चर है जहाँ पे आई वुड लाइक टू नो द फीडबैक इमीडिएटली फ्रॉम ऑडियंसेस, ना कि वेट करे कि 3-4 दिन बाद क्या पता लगे। और जिनके लिए पिक्चर बनाते हैं उनको पहले दिखाना चाहिए। इट्स बिन वेरी वेरी नाइस। आई मीन आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। बहुत इंटरेक्शन हुआ उसको लेकर, जैसे दे रिएक्टेड टू द मोशन पोस्टर, दे रिएक्टेड टू बोथ दैट पोस्टर्स। एक पोस्टर में उनको एक सर्टेन वे लगा, बेल वाले पोस्टर में उनका सर्टेन रिएक्शन आया। तो एटलीस्ट यू नो देयर आर सर्टेन पीपल हु आर इन अवेयर ऑफ योर फिल्म ऑलरेडी, एंड इट्स जस्ट वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए आपके फैन बेस में, सोनाक्षी के फैन बेस पे। पीपल हु हैव सीन ओकडू द ओरिजिनल, दे कैन सी इट एंड से अच्छा चलो हमको लग रहा है वी आर डूइंग जस्टिस टू इट। आपको भी उसी के द्वारा, आजकल न्यूज़ तो सारी ट्विटर से ही मिलती है। अगर मैं आज फोटो लगा दूं तो पहले ट्विटर पे आप ही उठा के फिर ही डालोगे। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद आवर ऑडियंसेस टू गेट ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लिंकअप्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये समझना पड़ेगा, जब मीडिया को शूट करता है तब भी वो लिखती है। तो स्ट्रैटेजी तभी सक्सेसफुल होती है अगर कोई दूसरा लिखे या चर्चा करे या आके फोटो खींचना शुरू करे। हम अपनी ज़िंदगी बीच में भी जी लेते हैं, तभी किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो जब मीडिया को शूट करता है तभी वो लिंकअप्स भी बनाती हैं। तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। जब आप सवाल उठाते हैं तो आपको अपने अंदर भी सवाल उठाना पड़ेगा कि हम क्यों लिख रहे हैं। अगर कोई ट्रूथ नहीं है तो आप दर्जा क्यों दे रहे हो उस न्यूज़ को? नहीं, मत दीजिए। द फॉल्ट इफ देयर इज अ फॉल्ट लाइज इन बोथ पार्टीज। इट इज नॉट ओनली कि अरे इनका लिंकअप करा रहे ताकि पिक्चर प्रमोट हो। आप लिखो मत, फिर तो ऑटोमेटिकली हम सब कम कर देंगे। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो ये अपने आप कम हो जाएगा। For Tevar, I did see Okudu, and I saw Gilly as well, which Vijay has done in Tamil. I saw both the versions. पर मैंने बहुत पहले देखी थी, जब एक्टर बना था उसके पहले डैड ने मुझे दिखाई थी, because Okudu is actually made in 2003. So I'd seen it back then, before Ishak Zada actually, and I'd really liked it back then. But I have not based my performance on either Mahesh Babu sir or Vijay, primarily because they cater to their sensibility and their audience and their major tremendous fan base. हमने कोशिश की है कि वी मेक अ फिल्म दैट इज मोर फिल्म ओरिएंटेड रादर देन स्टार ओरिएंटेड। जब आप ट्रेलर देखेंगे आपको शायद समझ में आएगा, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आप डेफिनेटली समझेंगे दैट द परफॉर्मेंस इज नॉट इवन रिमोटली क्लोज टू हाउ दे हैव प्लेड इट। इट्स सेट इन अ मोर रियलिस्टिक टोन इन दैट सेंस। नो, ऐसा थोड़ी ना कि सीन देख के फिर एक्टिंग करने जाऊंगा। अच्छा इन्होंने ऐसे किया, रेडी सर, थोड़ी ना ऐसे होता है। नहीं, तभी देखा था, याद था, जहन में स्टोरी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक कहानी अबाउट अ बॉय एंड गर्ल ऑन द रन, जहाँ पे दे आर नॉट इन लव विद ईच अदर, सर्कमस्टांसेस उनको एक साथ फंसा देते हैं। वो लड़का एक लड़की के लिए कुछ अच्छा करने जाता है, सब टेढ़ा हो जाता है उसके साथ। तो ही इज देन ऑन द रन विद दिस गर्ल दैट ही डजंट इवन नो। सो दैट आई फाउंड दैट डायनामिक वेरी इंटरेस्टिंग। हमेशा क्या होता है, लोग भागते जब प्यार में होते हैं, ये भगा रहा लड़की को क्योंकि फंस गया उसके साथ। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग पहलू लगा था, एंड इट्स प्योरली अ फिल्म दैट इज ऑन द रन दैट टर्न्स इनटू अ लव स्टोरी इवेंचुअली। आई थिंक फिल्म फेस्टिवल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज you come and discuss your love and passion for cinema. You get to watch great cinema. You get to watch films that maybe don't kind of get a big release normally, like MAMI, for example, that was played here yesterday, day before, I think. So it's important to have the right balance between celebrating our kind of cinema and allowing new cinema also a place here. It's a great place to meet people also. I mean, I get to meet you all, but beyond that, I would look forward to come here and just interact with people and discuss cinema. Like, I found it really interesting. There were some kids in there who want to be directors, who want to be cinematographers. To give them at least a conversation, give them that 5, 7, 10 minutes to chat. I hope it continues, and I hope the funding comes back into place to make it a celebratory festival rather than something where we are trying to push the point across that we need it. We deserve it as a city. We have to, if we are Mumbai, that is the fulcrum of the Hindi film industry, this is the least that we can provide, is a platform for all kinds of cinema to come into our country and feel welcome. See you guys. Well, I'm absolutely delighted that we have been able to put together the show because it seemed that it may not happen, but actually it's worked out rather well. Except that the size of the festival is a bit small, but the quality of films has been excellent, and I would like to compliment the director of the festival, Mr. Narayanan, and people who have in the selection committee who put together this festival, including, all the ones like, for instance,
people from the film industry. Quite a number of them came forward to support the film festival, which is how it should be, because this is a film festival that's meant to be, is supposed to be run by film professionals, and it's happened, and I'm absolutely delighted. We are hoping that it will happen. We are hoping that the kind of sort of involvement that the film industry itself, how they involve themselves in putting together this festival. I hope that will continue, because if it does, then of course our festival has a proper future. Although we've run it for 16 years, but it should run for longer. We can't possibly allow it to stop, because we've developed an audience and film lovers, and I'm sure they also expect to see good films from all over the world. कोशिश होनी चाहिए. मुझे लगता है कि सब कुछ है उसमें. You know, the work that was done on the creation of the Constitution of India has been absolutely a model, because that is the model on which many countries that have become free have followed. And I don't think that there's anything इसमें कोई कमी नहीं है. वैसे तो क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आप कर रहे हैं, संविधान जो भी संविधान आप बनाए हैं, उसको तो हर जनरेशन के लिए अमेंडमेंट्स तो होते ही रहते हैं. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वैसे ही है, क्योंकि दैट्स व्हाट मेक्स इट अलाइव एंड रेलेवेंट. थैंक यू. See, I want to actually thank everybody who supported this festival. And I not only want to thank people who supported it, but I want to also thank Reliance that brought it from where it was in 4 years, investing almost 20-25 crores to bring it here. And now, hopefully, it will become better and better every year. But I'm very, very grateful, extremely grateful to everybody. See, this year the festival, as you all know, was almost dead. I mean, we had only 5 weeks to build it up and bring it from near death to where we brought it. Hopefully next year will be much, much better. We can only hope and pray that now people come together and take it to where it should go. I think Mumbai being the city where we make cinema, we can over years really make it one of the top festivals in the world. I hope that happens. वो पीके का तो बात पीके करेंगे नहीं, अभी तो मामी का करेंगे. देखिए अभी आप मामी का एक बड़ा अच्छा क्लोजिंग फंक्शन एक्सपेक्ट कीजिए. See, in terms of our films, 19th December we will release PK, and 16th of January we'll release Broken Horses. The Broken Horses trailer will be seen with PK on the 19th of December, and the PK trailer will be seen day after tomorrow with Happy New Year. नहीं, हमारी तो आज ही दिवाली हो गई है. इतना अच्छा क्लोजिंग फंक्शन हो रहा है मामी का, इससे बड़ी क्या दिवाली हो सकती है. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू. See, I think all festivals should get shot in the arm, be it IFFI, be it MAMI. But my whole thing is that the more there are, the more... See, you have to understand that if staying in Warsaw, staying in Juhu, our young filmmakers see this kind of cinema, I hope and pray that their cinema will improve. We see a lot of stupid Hindi films. And I think some of them will probably think twice before making the rubbish they make, because they would have seen world cinema. So that is how festivals can help us make better and better movies. And more festivals means, I think, better films. मेरे को इसमें कोई डाउट ही नहीं. आपको डाउट है तो आ जाइए, आप इधर बता दीजिए मुझे. हाँ, बनती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. इसका मतलब नहीं है कि हॉलीवुड में हर जगह बनती हैं, लेकिन यहाँ तादाद थोड़ी ज़्यादा है. No, I only see cinema to get inspired. You see, I don't think as a filmmaker you look at your competition and you say, oh, this guy, maybe actors do that. I have 6 packs, I have 8 packs, I have 4 packs. But I as a filmmaker, I only seek inspiration from film festivals, not competition. Not at all. I also have the good fortune of having a great opinion about myself. So, for me, thank you. Well, very much excited. Very excited. And excited because that's the only day I could attend this festival. I was shooting. So thank God that I could take out time for this one day. I'm happy. Thank you. Yeah, I'm going to host the show, so I'm very nervous.
please touch wood that I do okay, because I get very shy when there's a big group and speaking in front of everyone. But I'm very excited, so I hope it goes well. I've come and seen a few films and I really enjoyed it, and it's a superb atmosphere. I have to say it's very electric. I mean, it sounds a bit cliched, but it really feels like a different world. So like that, it's really lovely. With the family, with 2 little children, and my show is airing from the end of November on Star World. So the Tara Sharma show, I'm excited about that. Very happy Diwali to everyone. Thank you. And we interviewed Mary Com on the show as a mum, so that will be exciting. The show is it's called the Tara Sharma Show, Diaries of a Mum. So it's topical parenting issues with mums from all walks of life. So celebrities, we have Kajol, Juhi, Mary Com on the show, and lots of regular parents as well. And then our stories and features, raising awareness for causes like autism, child sex abuse awareness. So it's all things related to parenting and kids. I would want everyone possible. But now, as I think Amir is about to come, perhaps I would say Amir and Vidhu Vinod Chopra, given the combination here. But honestly, the cast of Happy New Year as well. How are you? Okay, thank you. Better go and get ready. क्योंकि मैंने दाढ़ी निकाल दी इसलिए के कम विद मी ना क्या कहना चाहेंगे आज लास्ट शूटिंग है और जी हाँ मुझे एक्चुअली मैंने इतनी मेहनत नहीं की हाँ ज़रूर सपोर्ट मैंने किया मेहनत शायद किरण ने ज़्यादा की अन्नू ने ज़्यादा की और लोगों ने बहुत मेहनत की और मुझे खुशी है कि इंडस्ट्री की जो कोशिश है उसके साथ ये फेस्टिवल हम लोग सक्सेसफुली होल्ड कर पाए हैं और मैं कहना चाहूँगा कि ये हर साल ऐसे ही होना चाहिए कि इंडस्ट्री ये हमारा खुद का फेस्टिवल है हमारे शहर का फेस्टिवल है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री की कोशिश ये हो कि मामी जो फेस्टिवल है ये दुनिया भर में इतना पॉपुलर हो जाए कि हर देश से जो फिल्म मेकर्स हैं वो आना चाहें इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहें जो एक से एक फिल्म मेकर्स हैं एक्टर्स हैं हर देश के वो इस फेस्टिवल में शामिल होना चाहें ये हमारी कोशिश होनी चाहिए और उसकी तरफ हमें काम करना चाहिए तो हमें यकीन है कि हम कर सकेंगे ये हमें यकीन है हम कर सकेंगे well certainly all's well that ends well but at the same time I'd like to actually thank the Anil Ambani group of Reliance which जो पिछले 4 सालों से उन्होंने सपोर्ट किया इस फेस्टिवल को ये एक छोटा काम नहीं है बहुत बड़ा काम है कि पिछले 4 सालों में उन्होंने इस फेस्टिवल को सपोर्ट किया और आगे ले गए ज़रूर उनकी कुछ मजबूरी हुई होगी जो वो इस साल नहीं कर पाए लेकिन हम लोग ने किया है और आगे भी हम करना चाहेंगे तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 4 साल तक वो इस फेस्टिवल को यहाँ तक लेकर आए अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको और आगे ले जाएं दरअसल हम लोग ने वो मार्केटिंग का स्ट्रेटजी भी बनाया नहीं है उस पर डिपेंड होगा आमतौर पे हम टीवी शोज़ पे नहीं जाते आमतौर पे देखते हैं नो दिस इज जस्ट फॉर माई सेल्फ ना मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की है पहलवान नो आई हैव नॉट साइंड एनी फिल्म पीके के बाद अब तक मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की है सो अंटिल आई डिसाइड आई हैव नॉट डिसाइडेड येट well no actually I'm really happy to have been able to contribute unfortunately since I was traveling I could only contribute financially but my wife here did help out with all the work in the festival and I think that it really is something that the film industry should come forward once again and take the responsibility start the work earlier this time so they'll be a lot more prepared and hopefully in the years to come make this a festival that becomes one of the favorite destinations of people and filmmakers all across the world. So we'd like to take it to that level where it's some place that people like to come to, filmmakers, actors from different parts of the world. So that's a responsibility I feel the film industry in Bombay should take on itself. दिवाली की सेलिब्रेशंस तो हम हर साल हमारे घर में बहुत बड़ी पार्टी होती है हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं हमारे परिवार के सभी लोग होते हैं तो हमारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हम दिवाली मनाते हैं इस साल भी हम ऐसे ही कर रहे हैं 23 तारीख की शाम को हम सब मेरे घर पे सब लोग आ रहे हैं
और दिवाली की मुबारकबाद मैं सभी लोगों को देना चाहूँगा मेरी तरफ से। दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। दैट्स अ वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी। व्हाई वुड एवरीवन वुड वांट दैट? एवरीवन वुड वांट, जैसे कि अभी पीके लग रही है, तो मुझे लगता है कि कई लोग चाहेंगे कि पीके के साथ वो अपनी लॉन्च करें लोग, ताकि लोगों का ध्यान उस पर आए। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। आई थिंक दैट आई थिंक दैट we have to make a roadmap, we've got to make a plan for the future and look at it 5-10 years in advance. Every year it'll be hard to just cobble money together. Yeah, no. And we can't expect filmmakers to keep shelling out money. So we need to make a more comprehensive sort of vision for MAMI. Well, I think even financially. Well, I think personally what I feel is that we as a film industry should make this festival so special that even people would want to come forward and sponsor it. I think that is what our attempt should be. And I think that whether it's people from the film industry, whether it's people who come in as sponsors, it's important that our city of Mumbai, which is the home of Hindi films, should actually be hosting one of the best festivals in the world. That should be our attempt. So I think we need to work together, the film industry and people from different corporates, and work together to make it a favorite destination of filmmakers across the world. Thank you. Thank you. Hello, good evening. Hi. Thank you. And also advance birthday. Tomorrow is my birthday. I'm just announcing it every year. I'm too excited. Huh? What's your plan for your birthday? Very boring plan. I have no plan actually. Tomorrow I'm working because we are launching a song from Kill Dil. So that, and then मैंने कहा यार आधा दिन तो छुट्टी दे दो please. So they've given me half day off tomorrow. And then I'll go for a dinner or some film or something. I'll go. I'm very excited. So I'm obviously here for MAMI, and I missed the opening ceremony. I couldn't be here because I was working that day. So I had spoken to Anupama ma'am and I said, okay, I will come for the closing. So I'm so glad that in my own small way, at least my appearance can help the festival. And I'm so glad that despite so many problems, we've really soared and we've made the Mumbai festival also very big. Diwali, first of all, wish you all a very happy Diwali. I hope you all have fun. मेरा ज़्यादा प्लान नहीं है, उस दिन मेरा काम है थोड़ा सा, बट आई विल जस्ट डेकोरेट माई हाउस अ लिटिल बिट एंड उस दिन छुट्टी है, थोड़ी सी शूटिंग है बट थोड़ी सी छुट्टी भी है आधे दिन, आई विल स्लीप। आई थिंक किसी भी फेस्टिवल में आप अश्योर्ड रहते हैं द क्वालिटी ऑफ फिल्म्स दैट आर स्क्रीन। कभी कभी जब हम टिकट खरीद के एक पिक्चर देखने जाते हैं तो आप श्योर नहीं होते हैं कि वो पिक्चर अच्छी होगी या नहीं, लेकिन फेस्टिवल में आई थिंक ओनली द बेस्ट आर चोजन, सो यू आर ऑलवेज अश्योर्ड ऑफ क्वालिटी। It happens, yeah. Every film you can't be. It's like a gamble, because we are obviously dependent on all you people to like the film, and I think everybody can't like the same thing as you. So I did the film because I liked the script at that time, but obviously you guys didn't enjoy it. So that's a gamble, yeah. Every film will either be a hit or a flop. मैं समझ सकती हूँ वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आपको फिल्म नहीं पसंद आती तो आपको लगता है यार मेरे 3 घंटे वेस्ट हो गए, तो मैं समझ सकती हूँ वो क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, है मेरे दिमाग में है सारी। No, somebody has to choose me. I don't choose the filmmakers, so somebody has to choose me and make a Diwali blockbuster. So I can't answer that question. No, actually I haven't. I should ना। हर साल मुझे मेरी मॉम मैसेज करती है सुबह, टुडे इज़ धनतेरस एंड यू मस्ट बाय समथिंग, लेकिन वो हर साल मिस हो जाता है। मैं एक्चुअली अपने बर्थडे के बारे में इतना सोची हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। आप लोग सब आई होप मुझे गिफ्ट्स भेजने वाले हैं कल और केक्स भेजने वाले हैं। नहीं यार, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, इट्स जस्ट कि बर्थडे हमेशा मेरे लिए वो रहा कि आई एम वेरी एक्साइटेड, बट उतना ही है, कुछ एक्सपेक्ट। यू आर इन्वाइटेड, एवरीबडी, ओपन इन्विटेशन, प्लीज कम टू माई हाउस। Actually, for me it wasn't a long gap, because when Deepika had done it, I had obviously messaged her and told her what I felt. When Kangana had done it, I had spoken to her. So to every actress I had spoken in person. But there were a lot of journalists who were messaging me to take my quote when Sonakshi, said something on Twitter. So I said, instead of giving quotes to every channel or every journalist, I thought I'll just say it on Twitter what was my opinion. And it was great because, nobody then after that asked me, because they knew what was my opinion.
So for me, it was not a time lag. It was just the moment because everybody had started messaging me. So I said that I should, it is my duty to give my opinion out. So that's what I did. Yeah, of course. I've been chilling with him. I think he's looking very hot. I told him this is his best look. He's looking awesome. And I've seen some of his looks. He's been shooting Bajirao. So I've been seeing some pictures. They are awesome. I'm already excited for the film. Yes. अगर आप मेरा फ़ोन खोलेंगे तो मेरे पास ये पिक्चर्स हैं और मैंने रणवीर को बोला कि जिस दिन तुमने मुझे तंग किया मैं वो रिलीज़ कर दूंगी एंड हमारे सेट पे जितने लोग हैं उन सब ने देखी है वो पिक्चर्स और मेरे पास हैं वो रणवीर को भी मैंने नहीं दी क्योंकि मुझे लगा वो डिलीट कर देंगे है कहीं पे बट थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योरसेल्फ एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन थैंक यू थैंक यू थैंक यू I'm just going to be out of the city for 2 days, which I can't disclose where I'm going, but then I'm going to be back. Yeah. But yeah, just with friends. I'm going to celebrate it with friends. You know, I am so new to both the cultures. For me, you know, I've grown up watching. Oh, sorry. So basically, it feels so strange, you know, you're here, I'm talking there. Yeah, but I'm saying that for me, you know, I've just grown up watching films and I've been a big fan of movies. So being part of one really made me feel, you know, I'm privileged and everything. It's all cushioned, Bollywood, you know, especially with the people who I'm working with. They're very professional and they exactly know how to get work done out of an amateur. That is me. So I feel that, you know, I've got a lot of good support and a bunch of professionals who are working with me. See, I don't really have a professional background when it comes to acting, so my learning process is all on the set, you know, when I'm doing it. I've never experienced it, but I would want to once, and because it seems very interesting, you know. So I hope I always, you know, once at least in life I get a chance to be part of it. Happy Diwali to everybody. I don't know. Should we say anything else? Come on, okay. Come. Thank you. मैं बहुत एक्चुअली खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन पाई बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए फॉर अ फेस्टिवल लाइक दिस टू टेक प्लेस क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी फिल्में दिखाई गई हैं जो अदरवाइज़ हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है एंड एज पीपल हु लव फिल्म्स हु वर्क इन फिल्म्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को वर्ल्ड सिनेमा की नॉलेज हो और अप्रिसिएशन ऑफ सिनेमा हेल्प्स यू क्रिएट बेटर सिनेमा सो आई एम रियली हैप्पी समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग एंड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट एंड कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु worked tirelessly to make this event happen because I know that it was going through a bad time. It probably would not even have happened. So I'm very happy that's here. I'm happy to be here. पीके नहीं अभी पीके नहीं मिलती रहूँगी मैं आप लोगों से. Thank you. अच्छा हैप्पी दिवाली everyone. पहले तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली. Hi, this is Anushka Sharma and here's wishing everyone a happy Diwali and a happy New Year.
say that such festivals are very necessary, and we should have more festivals like these, where the niche filmmakers get a platform to show off their films, and these kind of films need to be recognized and rewarded at the same time. So I think this is a perfect occasion, and I'm very, very glad to be here today. No, I don't think there's any rivalry in any cinema, because cinema is a very universal language, and wherever you go, the problems are the same, or emotions are same. People are the same all over the world, and the natures never change. And what we show through our movies is sometimes a comment on society and what's happening around the world. So I think cinema usually brings people together instead of taking them apart. Well, मैं कहूँगी कि हर टाइप की फिल्म बनती है, इतना ही है कि फिल्म्स आर फॉर एंटरटेनमेंट, और अगर लोग कोई भी फिल्म देख के एंटरटेन होते हैं तो हमारा जो ध्येय था वो सफल हो गया. थैंक यू. आई थिंक एक तो पहली बात कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मामी बहुत सक्सेसफुल रहा है. एंड आई थिंक इंडियन फिल्म फेस्टिवल होने के बाद इंडियन सिनेमा को ये चाहिए, जो मामी एक इनिशिएटिव ले रहा है, हमारी सबसे बेहतरीन फिल्म्स दिखाई जाती है एंड अवार्ड मिलते हैं उन्हें. सो बस कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि बहुत सक्सेसफुल रहा. आई थिंक सभी फिल्में जो फिल्म मेकर बनाते हैं वो अपने टेस्ट से बनाते हैं और एक ऑडियंस को ध्यान में रख कर बनाते हैं. सो आई थिंक उन ऑडियंस के लिए वो फिल्म चलती है, कुछ ऑडियंस के लिए वो नहीं चलती. तो आई थिंक हर एक को एक हल्की फुल्की फिल्म भी चाहिए होती है, मज़ेदार भी, मसालेदार भी और इमोशनल भी. तो हर एक के लिए एक ऑडियंस है तो फिल्म बनती है. आई डोंट नो, बट आई रियली थिंक वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, दो मेरी जो बहुत फेवरेट फिल्म्स हैं, खुदा गवाह और लम्हे. आई थिंक अगर वो फिल्म बने दिवाली पे कभी आती तो मेरे हिसाब से ब्लॉकबस्टर होती. मुझे नहीं पता, मैं सारी फिल्म देखती हूँ, मुझे सारी फिल्म बहुत पसंद आती है. बल्कि जो मेरे मैनेजर्स हैं मुझे यही बोलते रहते हैं कि तू हर फिल्म देख लेती है, बट मैं हर फिल्म एक ऑडियंस के हिसाब से देखती हूँ. मैं ये नहीं नोटिस करती किसी ने कपड़े क्या पहने हैं, डायरेक्शन क्या हो रहा है. मैं एक फिल्म देखती हूँ एंजॉय करने के लिए. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली. सेफ रहिए, पटाखे मत जलाइए प्लीज़, पोल्यूशन का सोचिए और जानवरों का. थैंक यू. Good evening, everyone. I really have a lot to say, actually. First of all, thank you, Anu, for inviting us, really, because sometimes we get so caught up in the glamorous world of Bollywood that we don't really think beyond our own lives. So thank you for giving us some humility, and I'm so glad that I've, in my small way, been able to be a part of MAMI this year. It's really beautiful. All you guys have worked with a lot of heart, and thank you so much, and I promise I'll be here every year. Thank you so much. Thank you. I'm now going to request Mr. Weber to give the next award to the winner of the Silver Gateway of India for Best Actress. Martin could not join us, but the director, I think, now this is when the teleprompter is doing something different. So, yes, the Silver Gateway of India for Best Actor goes to, can you? Will you call me to speak later or should I just speak right now? Because I want to speak right now. Okay, then come. Okay. Firstly, I'm really so happy that I'm here. This is the best award ceremony I've ever been to, because I can feel everyone's passion, love, hard work, and whatever you guys have done. I mean, as filmmakers and as all of you all to put up this event, I'm so overwhelmed, and at so many moments through the evening I was, very overwhelmed. So I hope next year and the years to come, this happens every year without any of the things that you have to face this time. I don't know what all it is. So yeah, and I'll do everything in my capacity to contribute to this festival. Thank you. And the international competition jury for the Silver Gateway of India for Best Actor goes to Martin Lozion. I think because it's in French. The pronunciations. It's Loizillon. So Martin.
international competition jury of the 16th Mumbai Film Festival awards the Silver Gateway of India for the Best Actor to Martin Loisillon. Loisillon. Loisillon, it means a little bird. Loisillon? Yes. Loisillon for the film Fever. In this terse, stylish depiction of a monstrous act and its consequences, Loisillon brings... Very good evening to all of you. Really, this evening has been very rejuvenating for me. I think nothing brings people together or unites countries like cinema does. And we have like cinema from all over the world in this festival, the Mumbai Festival. And I was so surprised to learn that they had so many hiccups, because I feel such festivals are very important for people who make films from their heart, because this is where they get to show their talent. And they are from a niche, they make niche kind of films, and they need this platform to show their talent. And these films need to be seen, to be rewarded, and to be recognized. So I'm so happy to be here today. Another thing I would like to say is that I'm like at a loss for words, because I saw so many young people here today, such bright faces. And sometimes when you're working in films for too long, there's a veil of cynicism kind of that, you look at films in a different way after a while. But today it was as if, it just cleared out, and I can see the talent, I can see the brightness, and I can see the hope. And I think we, as, the guardians, like I say, the guardians of the galaxy called cinema, we need to give them all the tools, the encouragement, we need to give them the accessibility and everything they need to be more creative and better at their art. So thank you so much for calling me, MAMI and Hindustan Times. It's wonderful to be here. Thank you for a very, very inspiring evening. So thank you. Going to unveil a film which is actually on empowerment of women. We don't actually have it on the teleprompter, but my kids happen to go to school with Priya Tanna-san, so I know all about it, and I've been following it in the news, and we'd love Madhuri ji to say a few words. This is a lovely film made by Vinil and produced by Mr. Kurvilla. It talks about women empowerment. It talks about violence against women. I feel to see a change in society, you have to be the change. And I was very fortunate to be associated with this film. All of us are, we have a responsibility towards people who don't have a voice. So it's wonderful to see when people who do have a power, give the voices to these people who cannot speak. And this is one such film, whether it's, child rights advocate, being an advocate for child rights, or bringing a change in the society. I think we all are responsible in our own ways to take that step and make that change happen. So I would like to thank all the people in this world who are making that change, making the difference, and this film is dedicated to them. So as we unveil it. And finally, everyone's heaving a sigh of relief. Are you all still going strong? Going strong? Yes, yes. So finally, we'd like to call on stage an icon of the amazing Aamir Khan. I'm really happy to be here. I'm really upset that I wasn't here this entire week. I was traveling. But I'm so glad I could make it for the closing night. I'd just like to say that it's so important, I think, for our city of Mumbai to really sustain this festival. I know that this year the festival went through a really rough time. And I'd like to start by thanking all the people who
actually created the festival, thought of it and brought it till here, these last 15, 16 years. All the very people who were behind it from the first year. And the Anil Ambani group for the last 5 years has supported this festival, and I'd like to thank them as well. And all the various people who came forward this year when help was needed. I think probably as one of the people from the film industry, it's my dream that the Mumbai Film Festival, MAMI, finally becomes a destination that filmmakers from different parts of the world look forward to. A festival that filmmakers and actors from different parts, talented people from different parts of the world would like to come here and share their time with us, their work with us. I'd really like to see this festival reach that stage. And I think that is possible if we all put our minds to it. So I think Anu and Mr. Narayan, we should look forward to a wonderful festival next year. And I think that the film industry, who has, I think over the years, the Bombay film industry over the last few years has not been so supportive or so aware and so involved, would like to now be involved. We really have to make this our own festival. And I think that's the spirit with which it started. I remember I was part of the first year as well, when I gave an award to Dev Saab. So I remember that emotion with which it actually started. And somewhere along the way, even I kind of forgot all about it. But in a sense, I'm glad what happened this year happened, because I think it reminded all of us that this festival means a lot to us. And I think we can really come together to make this festival really grand and what it is, and warm as it has been. I really hope that all the people who've come from different parts of the world have had a good time. I hope that you guys have enjoyed the festival. You have, huh? Good, I'm so glad to hear that. I'm so glad to hear that. I think that also this festival really gives an opportunity for young filmmakers in Mumbai and in other parts of India to showcase their work. You know, as we saw some young talent in the under 25 section, etc. So it's really nice, because we are trying to. This festival is also kind of the breeding ground for young talent, giving them an opportunity to show their work, and that's wonderful to see as well. So for various reasons, I think that we all need to make sure that this festival goes from strength to strength. I'd like to congratulate all the winners today. I'd like to congratulate all the people who took part in the festival, and thank all the volunteers and people who worked so hard to make this possible. I know that a lot of people have worked day and night on this. So congratulations to MAMI for having such a successful outing this year, and I hope that it goes from strength to strength. Thank you. Thank you. Well, you know, whenever we have a festival in Mumbai, we always have an excellent response as far as the audience is concerned. So I think this is no exception. We've always had very successful festivals. This had its share of problem putting it up, because our regular sponsor had finished his term, as it were. So last year was the last time. And so we had to start everything from scratch. And that took a bit of time, and we couldn't possibly raise the kind of money we would have liked to. But we had to put the festival together, also because you see the selection committee and because the Mumbai Film Festival is among the 10 important festivals of the world. So obviously it's taken a lot of doing, but we have people who send in their films. And this year we have had an excellent performance, as everybody who's seen the film is witness to. It's a marvelous picture. But I have only one small regret, that the festival has unfortunately had to remain geographically only in this particular area. Ideally, it should have been in south, center, northwest here and northeast. This is how we had planned it originally, and we were having festivals like that until last year.
But now, unfortunately, we cannot afford that. So we've had to localize the festival in this region, on the Iguazu, which is, it's a bit unfair on people who live in South Bombay like myself, because coming here is not the easiest thing. But of course, people who are serious cineasts and film lovers will go to any length to see a film of their choice. So I think in that sense the festival's worked itself out, and I think it's been a successful festival. It's last but one day today, and tomorrow is going to be the last day of the festival. And I hope everybody who's come to the festival has enjoyed being here and seeing the film. Sir, which is the one thing which surprises you most? You didn't expect it that. I am hoping to see some of the films which I have not. I haven't seen anything. I'm totally deprived, alas. But there are some excellent films, and there are many films that are, all the famous directors also, Jangi Moore and so on and so forth. But there are also like Eric Linklater and some other directors whose work is quite excellent. I haven't seen them actually, which is a pity. But I hope at some other time, some other place. बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब बहुत मिस कर रहा था मैं. हम लोग शूट कर रहे थे शिमला में तो आ नहीं पाए थे, तो अभी वापस हैं सिनेमा में, और इतने जब फिल्म फैंस हैं, फिल्म लवर्स हैं, उनके बीच में यहाँ पे आके फील्स ग्रेट. अलग तरह की नहीं दिखाई जाती, वर्ल्ड वाइड सिनेमा दिखाया जाता है जो हम वैसे नहीं देख पाते हैं अमूमन. तो यहाँ पे वो सब चीज़ें हम बड़ी स्क्रीन पे देखने का मौका मिलता है हमें, और कुछ बहुत ही जो ग्रेट डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड सिनेमा के, उनकी फिल्म आती हैं, तो बहुत ही आई थिंक अच्छा प्लेटफॉर्म है एक फिल्म लवर के लिए. इन्जॉय. आई एम लिविंग फॉर केप टाउन टुमारो. मैं हमारी अधूरी कहानी की शूट के लिए जा रहा हूँ, तो उसमें अभी तो दिवाली केप टाउन में ही मनाई जाएगी, तो घर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, पर अच्छा है, फिल्म सेट पे रहेंगे. आई थिंक कर्म ही पूजा है. अभी डॉली की डोली है जो फेब में रिलीज़ है, फिर शिमला मिर्ची है रमेश सिप्पी सर के साथ, फिर एक हमारी अधूरी कहानी में एक स्पेशल अपीयरेंस है, वो मैं कर रहा हूँ. बहुत अच्छा लगा यार, बहुत मज़ा आया. एक बहुत ही लाइट हार्टेड सी स्वीट फिल्म है, और स्पेशली आफ्टर सिटी लाइट्स और शाहिर की कायपोछे जैसी कुछ बहुत चैलेंजिंग और टफ पार्ट्स करने के बाद डॉली की डोली जैसी एक लाइट फिल्म थी, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया. नेशनल अवार्ड मिलने के बाद क्या लगता है, ऑफर्स आने शुरू हो गए? ऑफर्स तो पहले भी आ रहे थे, और ऐसी कुछ फिल्में होती हैं जिन्होंने आपको ज़िंदगी में बहुत इंस्पायर किया हुआ होता है. उन फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया होता है आपको फिल्म मेकर बनाने में. मेरे ख्याल से जुनून वो फिल्म है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है एज अ स्टोरी टेलर एंड अ फिल्म मेकर. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन इन हिंदी सिनेमा. It's one of the best films that I've seen in Hindi cinema. I'm very, very proud to be associated with it in any capacity, and I would want maximum numbers of people ultimately to see a movie like this, like Junoon, which has immense significance and immense entertainment value to cinema and to life as such. खुशी है कि दोबारा ये फेस्टिवल हुआ है, और ये हमारी सारी फिल्में इसमें दिखाई जा रही हैं, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन फिल्मों के लिए जो आमतौर पे जिन्हें थोड़ी सी मुश्किल होती है और थिएटर्स में आ पाती हैं, तो उन्हें स्क्रीन्स मिलने की मुश्किल होती है, क्योंकि कोई 200 करोड़ की फिल्म उसके सर पे आके बैठ जाती है, तो छोटी फिल्में अक्सर दब जाती हैं इसमें. जैसा कि आंखों देखी फिल्म जो बहुत ही बेहतरीन थी, उसके साथ हुआ, और कई फिल्मों के साथ हुआ. तो ये कम से कम मामी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नौजवान फिल्म मेकर्स और वो फिल्में जो मेन स्ट्रीम नहीं है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है. बेहद खुशी है कि जुनून की स्क्रीनिंग आज यहाँ हो रही है. शशि साहब का इरादा ही ये था कि वो ऐसी फिल्में बना सकें जो उन्होंने फिल्म वालास कंपनी शुरू की थी, जो कमर्शियल भी हों और यादगार भी रहें, और मेरे ख्याल से उनकी ये कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब हुई. जुनून के ज़रिए उत्सव एक और फिल्म बनाई थी, उसके ज़रिए कलयुग जो शाम साहब की दूसरी फिल्म थी उसके ज़रिए. तो
जुनून पे मुझे बहुत फ़ख्र है और मैं बहुत जज्बाती तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ उस फिल्म के साथ, तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आना। मेरे लगने से क्या होता है, होना ही चाहिए ऐसा कि कमर्शियल फिल्म्स का कुछ तो अल्टरनेटिव मिलना चाहिए नौजवान लोगों को, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि काफ़ी तंग आ चुके हैं उस फॉर्मूला से, ख़ासतौर से नौजवान ऑडियंस, दे क्रेव समथिंग एल्स। और हमारी इंडस्ट्री की जिद है बस कि इस तरह की फिल्में बनाए जाते हैं जिसमें एक्सीलेंस का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल, जितना मैं आर्ट फिल्म्स के लिए सूटेबल था उतना ही वो कमर्शियल फिल्म्स के लिए सूटेबल है। जी, मैं दिवाली पर बम्बई शहर से बाहर निकल जाता हूँ क्योंकि शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने फार्म पर चला जाता हूँ, वहाँ पे मेरे कुछ लोग हैं, वहाँ पर उनके साथ मैं थोड़े से पटाखे और फुलझड़ियाँ वगैरह जलाते हैं और बस खामोशी के साथ रहते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से। दिवाली, शुभ दिवाली। थैंक यू।